Good morning. Suzlon has opened 1,200 crores rights issue on 11th October, and the issue closes on 20th October. The right entitlement ratio is 5:21. I checked the shareholding pattern, so the patterns are not very great, where the promoter holding has been consistently coming down. Now promoter holds only 14% and the company has been consistently making losses. So whether to apply or not to apply, I'll leave it to you. But now this is not a company which is profitable. They have been making losses for many years now. Reliance has corrected 11% in this month. After AGM on 29th August, the market is worried about the demerger of the stock, as their son and daughters are going to take the active role. So something which market is not comfortable, I feel so. So that is why the stock has been correcting, and in spite of crude prices correcting, the GRMs were at higher also. My Reliance never moved higher. But something is something which is not meeting the eyes. Globally, there are few interesting things which are happening. In UK, the way bonds behaved yesterday, suddenly the central bank in UK came out to say we are buying bonds. Otherwise, situation would have been even murkier. So they wanted to withdraw quantitative easing. Now, again, they are buying bonds. Previously they were selling bonds. Now they are buying bonds. So it is like utter confusion in UK, and this can go to US also very soon. So instead of quantitative easing or quantitative this thing, it has become quantitative confusion across the globe. That is why there was a rally in the market. Because again, the money printing has started. So everybody thinks it will go to US. So I hear also in India, I think we might see rally. If quantitative easing is going to happen, then the rally can be very strong. It will be led by banks mainly, banks, and because the dollar index is slightly getting weaker, so it will. Our currency also will slightly become stronger. So that means bank is something which will be rallying today. So we need to see how it happens. NIFTY rebalancing, it will happen tomorrow, where Adani Enterprises would come in and Shree Cement would exit. And there is a minor weight reduction in Reliance, Infosys and TCS in NIFTY 50. Krishna Diagnostic, now it is planning to launch 600 new centers across India, foray into retail healthcare services also. Now they are mostly in hospitals or in other places. So but now they want to be direct to customers. Previously it was B2B. They are the largest service provider of radiology and diagnostic service under one roof, with 200 plus location is what the company exchange notification says. Common sources are saying that this month, which is going to complete, the GST revenue collection will be 1,45,000 crores. Indian fertilizer companies sign a MOU for Canada Kenpotax to supply 15 lakh metric ton of potash annually for a period of 3 years. And there are few companies which have done that. One is Coromandel, Chambal, and Indian Potash. So our government is trying hard to get potash after the Russia-Ukraine war. Archana was speaking about Chemcon. Chemcon also commissioned 2.1 megawatt of solar power. GMR Airport has raised 1,110 crores from JP Morgan and Morgan Stanley. This fundraising is for repayment of bond which was due on 24th September. Not a great news, because for repaying the existing loan, they are taking loan. So this is something I would not like it. Now Reliance Retail, it has renamed Future Group Central into Centro.
So many of the retail groups thing has been taken over by Reliance, so they are renaming it. There is a company called OFSS. Oracle is a parent company. So they have to pay a fine of 23 million to settle charges of bribing officials in India, UAE and Turkey. And this is the second time Oracle is paying the fine. In 2012, it was fined for Indian unit for again bribing. So this is something negative for the stock. Jindal Steel repays last installment of international debt of $1.8 billion, which it has borrowed. It has repaid in last 4 years. The last installment was 105 million. Anupam Rasayan launches QIP. Floor price is 762. Discount will be up to 5%. With that, over to you, Kshitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी ये कॉल को एक बार अपडेट्स हम लोग हिंदी में देखते हैं. सुजलॉन जो कंपनी है उनका प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट आ रहा है, तो वो 11 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और क्लोजिंग 20 अक्टूबर को है. और ये जो राइट अलॉटमेंट का रेशियो है वो 5:21 है. आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी में बहुत ही कम है, डाउन हो चुका है. और कंपनी लगातार बहुत ईयर से लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है. तो आपके ऊपर हम लोगों ने छोड़ा है कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं, बट जस्ट हम लोग हमारे एंड से ये अपडेट दे रहे हैं. नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर. रिलायंस इंडस्ट्री उनका जो एजीएम था 29 अगस्त के, उसके बाद इस स्टॉक में बहुत सारा करेक्शन देखा गया है. ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखे तो 11% स्टॉक नीचे आ गया है. मतलब एजीएम होने के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत कंसर्न है, क्योंकि उनका जो डीमर्जर है स्टॉक के ऊपर उसके लिए वरिड है. तो ये एक मतलब समथिंग ऐसा कुछ है कि जो दिख नहीं रहा है. तो ये इसके कारण स्टॉक में बहुत हम लोगों ने अभी ये मंथ में करेक्शन देखा गया. ग्लोबली बहुत सारे चीजें हो रही है, जैसे कि कल यूके में बॉन्ड यील्ड जो है बहुत ही अच्छे मतलब एकदम लगातार उसमें मतलब अप आया था. तो सडनली सेंट्रल बैंक ने बाइंग बोला कि वो लोग बाय करने वाले बॉन्ड्स में. तो ओवरऑल एक कंफ्यूजन चल रहा है यूके में. तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही जल्द यूएस में भी आ सकती है. तो क्वांटिटेटिव कंफ्यूजन है ग्लोबली, तो ओवरऑल मनी प्रिंटिंग भी स्टार्टिंग होगा. तो क्वांटिटेटिव ईजिंग होने के वजह से एक स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है. तो बैंकिंग स्टॉक में आप रैली देख सकते हो उसके कारण, क्योंकि जो अपना रुपी इंडेक्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा. तो ये बैंकिंग में आप मतलब मोमेंटम देख सकते हो इसके कारण. कल निफ्टी का रिबैलेंसिंग होने वाला है, तो अदानी इंटरप्राइजेस निफ्टी में ऐड होने वाला है और श्री सीमेंट जाने वाला है. उसके अलावा थोड़ा बहुत वेटेज का भी चेंजेस होने वाले हैं रिलायंस टीसीएस में. नेक्स्ट अपडेट है गवर्नमेंट का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो 1.5 लाख करोड़ सितंबर मंथ में आया है. तो गवर्नमेंट है कि उनके ऑफिशियल ने बोला है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब ओवरऑल 1.4 लाख करोड़ सितंबर मंथ में आएगा ओवरऑल. नेक्स्ट अपडेट है कि यूनियन मिनिस्टर है केमिकल फर्टिलाइजर्स, उन्होंने बोला कि वो एमओयू जो है वो साइन कर रहे हैं कनाडा कैनापोटेक्स के साथ. तो ये बेसिकली जो केमिकल जैसे कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा रहेगा. उसमें कोरोमंडल है, चंबल फर्टिलाइजर है, वो जो पोटाश एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है उनके लिए. तो ये बेसिकली पॉजिटिव होगा. देन केमकॉन जो स्पेशलिटी केमिकल है, मतलब उन्होंने सेटअप करने वाली है सोलर प्लांट. देन नेक्स्ट अपडेट है ओएफएसएस के ऊपर. ओएफएसएस ने फाइन पे किया है 23 बिलियन का. इंडिया, यूएई और टर्की, इसमें कंपनी ने ये सेकंड टाइम फाइन पे किया है. इसके उन्होंने ब्राइब किया उसके वजह से. और ये इसके पहले भी कंपनी ने जो उनका यूएई सेगमेंट था तभी भी फाइन पे किया था. तो ये सेकंड टाइम है, तो ये नेगेटिव रहेगा कंपनी के लिए. देन रिलायंस रिटेल बहुत सारी रिटेल सेगमेंट में कंपनीज एक्वायर कर रही है, तो और बहुत सारी कंपनी का रीनेम कर रही है. देन नेक्स्ट अपडेट है जिंदाल स्टील के ऊपर. जिंदाल स्टील रीपेमेंट कर रही है उनका जो अभी उन्होंने लास्ट रीपेमेंट किया $1.8 बिलियन का. और नेक्स्ट अपडेट है
जो GSPL के ऊपर कंपनी का जो टारगेट है और कि वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ साउथ अफ्रीका बिजनेस से करेंगे थ्रू SKU रैशनलाइजेशन के तरफ से, और ये उनका एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन होगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा साउथ अफ्रीका में। और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है नाइजीरिया में वो अभी 10 के स्टोर्स था 2020 में, और अभी जो है वो 18 के स्टोर्स है, और उनका एम है कि वो 120 के स्टोर्स करेंगे नेक्स्ट ईयर में नाइजीरिया में। तो ओवरऑल हम लोग मार्जिन फ्रंट में देखें तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंसर्न रहेगा और मार्जिन से थोड़े स्ट्रेस में रहेंगे। तो उनका आइडिया है कि वो बैलेंस करेंगे ग्रोथ और मार्जिन दोनों को। करंटली मतलब चैलेंज ये है कि जो मतलब रीमेन है कि देयर विल बी ऑलरेडी 17 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट है, और जो फ्राइट कॉस्ट है वो भी राइज हुआ है सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट अपडेट है टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स ने जो उनका लेटेस्ट वेरिएंट है टियागो ईवी का वो लॉन्च किया है, और उसकी जो प्राइस है वो 8.49 लाख है। ये फर्स्ट हैचबैक है ईवी सेगमेंट में। अभी तक ऐसी ईवी पैसेंजर नहीं थी व्हीकल सेगमेंट में जिसकी प्राइस बिलो 10 लाख थी। तो ऑलरेडी ये अफोर्डेबल कार है ये सेगमेंट में जो टाटा मोटर्स ने लॉन्च की है। उसके पहले टाटा मोटर्स ने लॉन्च की थी टाइगर 12.49 लाख की। और ईवी करंटली ये मार्केट में जो है, उसके अलावा जो अदर मैन्युफैक्चरर्स है उसमें हुंडा है, किया है, जिसकी प्राइस अबाउट 20 लाख है। और अभी व्हीकल जो है जो अभी नया लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने टियागो, उसका बुकिंग स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर से। और टाटा मोटर्स का जो प्राइवेट व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर है 17% एंड मारुति का 39%। सो नेक्स्ट अपडेट है सीमेंट सेक्टर के ऊपर। हमारे जो सीमेंट डीलर्स है उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो एवरेज सीमेंट जो प्राइस है ऑल इंडिया लेवल पे वो इंक्रीज हुई है 2% मंथ ऑन मंथ बेसिस सितंबर मंथ में। और थोड़ा बहुत वीकनेस देखा गया था हम लोगों ने जुलाई से अगस्त मंथ में। तो एवरेज सीमेंट प्राइस थी तब ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल डिक्लाइन हुई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 23 में। हम लोग को लग रहा है कि जो डिमांड है वो इम्प्रूव होगी पोस्ट दिवाली के, मतलब दिवाली के बाद, और जो प्राइस हाइक है वो स्टार्ट होगी। तो ये हम लोग को देखने जैसा रहेगा। लास्ट 1 मंथ में जो बहुत सारी मिड एंड स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक है उन्होंने रैली ऑलरेडी देखी है, ये प्राइस हाइक एंड मतलब जो एंटिसिपेशन किया उसके कारण। अभी हमारा न्यूट्रल व्यू है सीमेंट सेक्टर के ऊपर, बट बेटर प्राइस पॉइंट के लिए अल्ट्राटेक बाय करने के लिए हम लोग को वेट करना चाहिए। देन नेक्स्ट अपडेट है भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स। उनको एक ऑर्डर मिला है NTPC से जो उड़ीसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वहां से। नेक्स्ट अपडेट है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल उनका एक रिपोर्ट आया था, उनके अनुसार मार्केट शेयर गोल्ड ज्वेलरी का जो चेन स्टोर्स है उन्होंने 14% नेक्स्ट 5 इयर्स में सरपास करेंगे। तो ये टाइटन और कल्याण ज्वेलर जैसा रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट में जो स्टॉक्स है उनके लिए फायदेमंद रहेगा। केमिकल स्पेशलिटी जो कंपनी है उनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन था P9 फैसिलिटी मंजूसर बड़ौदा में वो स्टार्ट हो चुका है। टोरेंट फार्मा के ऊपर अपडेट था। टोरेंट फार्मा में US FDA का कल इंस्पेक्शन हुआ था मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है इंदिरा गुजरात में, और ये इंस्पेक्शन हुआ था सितंबर 19 से लेकर सितंबर 28 में। और ये इंस्पेक्शन होने के बाद कंपनी को फॉर्म 483 इशू किया है 3 ऑब्जर्वेशन के लिए। नेक्स्ट अपडेट है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स दैट इज नायका। नायका के ऊपर बोर्ड है वो 3 अक्टूबर को जो बोनस और उसका जो कंसिडर और अप्रूवल के लिए उनकी मीटिंग है, तो ये वॉच आउट करने जैसा रहेगा। देन जेंसॉल इंजीनियरिंग जो है वो 133 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू से रेज करेंगे। कंपनी ने बोला है कि वो उनकी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है वो अप्रूव हुई है 12,81,993 इक्विटी शेयर्स की, और जो इश्यू प्राइस है वो 1036.25 पर शेयर है। और इससे कंपनी रेज करेंगी 132.84 करोड़। ब्लू डार्ट कंपनी है, उन्होंने जो शिपमेंट रेट्स है वो रेज किए हुए हैं, और कंपनी ने अनाउंस किया है कि एवरेज शिपमेंट प्राइस है वो इंक्रीज होकर 9.6 हुआ होने वाला है कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल 23 में कंपेयर टू 2022। सो जनरल प्राइस इंक्रीज जो है वो जनवरी 1 से होगा 2023 में। अनुपम रसायन है, उन्होंने इंडिया में QIP लॉन्च किया है। तो कंपनी ने
ओपन किया है जो QIP वो सितंबर 28 से है, और अप्रूवल जो होगा प्रिलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट होने के बाद। और जो फ्लोर प्राइस है वो फिक्स है 762.88 पर शेयर, और ज्यादा से ज्यादा इसमें ऑफर डिस्काउंट अप टू हो सकता है 5% फ्लोर प्राइस के ऊपर। वो सीमेंट है उनका फिफ्थ सीमेंट प्लांट के लिए कमीशन हुआ है, और जो ये फिफ्थ सीमेंट प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में है। और जो प्लांट की जो क्लिंकराइजेशन कैपेसिटी है वो 2.25 मिलियन टन पर एनम है, और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये प्लांट की वो 3000 करोड़ है। लास्ट अपडेट है जेंसेल इंटरनेशनल के ऊपर। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो कोलैबोरेशन करेंगे बेंटले सिस्टम के साथ, जो प्रोवाइड करती है 3D मैपिंग कैपेबिलिटीज मेजर सिटीज में ओवरऑल अक्रॉस इंडिया में। तो ये बेंटले सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है। Technical derivatives update. Yesterday, if we see Nifty opened on a gap down note near 16,800 levels, and this level was very crucial, and Nifty was able to hold those levels for a brief period, and from those levels, it started at upwards journey to move towards 17,000 levels. And if we see, then we could see the 17,000 levels was acting as a stiff barrier. Index could not surpass 17,000 levels, and we could see in the second half again Nifty coming back to the day's low and making a new low near 16,820 levels. So if we see that this now market has become a more of sell on bounce. So no, the rally, if we see, if it's not getting much strength over there, all the rallies which are there are used to get the new shorts and to be sold over there. On the sectoral front of us, if we see, then only IT and pharma, the defenses were in the green, while as the high beta names like media, metal were lower, and banking financials was also trading weak. And if we see, then today's also, as per if you see the global citing views, so Dow has rallied near about 2%. So we are upping near a opening of 160 points, odd points. So this could be, and tomorrow being an RBI policy meet also, so this rally could be used to create fresh shorts in the position. So we should trade very lightly and let this event pass over to build up and to get this expiry also over. So today being an expiry day also, we could find some wild volatile moves, so avoid that also. And in the Bank Nifty also, if we see, Bank Nifty is also correcting from the past trading session. It has broken its psychological 38,000 mark. And now if we see, the next support is its near its 200 DMR, which is placed at 36,500 levels. And on the options front, if we see, then Bank Nifty, we are seeing for this expiry 37,500 put writing, and the call writing is at majorly 38,000. And while as in the Nifty, if we see in the options front, then 16,700, 16,700 are the put writers over there. And on the call front, if we see, then 69 17,100, 17,000, where the major writing is available. The 17,000 is the highest. And in the Bank Nifty, if you see, the fresh shorts were added in the index with the addition of 8% overall. And Nifty also fresh short for built up to the tune of 4%. And advanced decline also was negative with 97 stocks on the gaining side and 101 stocks on the losing sides. In a rollover front, rollover is more or less compared to the same like last month, no much of change. That's 64% in the Nifty, while as in Bank Nifty it's 62% in the same month last expiry. And on the FI statistics, the FI also added fresh longs in the contracts, that is 111 contracts. So they are net shorts by 99,000 contracts, and their long short ratio has marginally improved to 27%. And in the cash segment, again, they are net sellers to the tune of 2,800 crores. And in the DI, they have buy to the tune of 2,544 crores. So that's it from mine. I'll hand over to Archana ma'am for more updates. Thank you. Thank you, Hitendra. Good morning, team. A few updates from my side, starting with Genesis International. The company has announced collaboration with Bentley Systems to provide 3D mapping capabilities for major cities across India. So Bentley System is an infrastructure engineering software company that comes as a positive development on the Genesis International front. On Ramco Cements, the company has commissioned 5th cement plant at Andhra Pradesh. The plant has a clinkerization capacity of 2.25 million tons per annum, and the project cost of the plant is close to 3,000 crores. So Blue Dart has announced average shipment price increase of 9.6% for calendar year 23 as compared to 2022. The general price increase will be effective from January 1, 2023. On Jensen Engineering, the company has said the board has approved preferential allotment of 12.8 lakh equity shares at an issue price of 1,036 per share. With this, it has raised rupees 133 crore via preferential issue.
On FS and e-commerce ventures, which is NICA, the board of the company will convene a meeting on October 3, 2022 to consider and approve the issuance of bonus shares to the equity shareholders. So this news could bring some positivity in the stock, and there could be some upside in the stock price. On Torrent Pharma, the US FDA inspected the company's manufacturing facility as Indira, Gujarat from September 19 to September 28. At the end of the inspection, the company has been issued a Form 483 with 3 observations. None of these observations were related to data integrity. On Chemcon Specialty Chemicals, the company has commenced commercial production at Penang facility in Manjusar near Vadodara. On Titan and Kalyan Jewelers, the market share of gold jewelry chain stores can surpass 40% in next 5 years, according to a report by the World Gold Council. So that comes as a positive development on the all retail jewelry stores like Titan and Kalyan Jewelers. On Bharat Heavy Electricals, the company has got NTPC order for Odisha thermal power project. A few other updates. One on Tata Motors, the company has launched its latest variant of Tiago EV at 8.49 lakhs. This is also the first hatchback in the EV segment. So far, there is no EV in the passenger vehicle segment, which is priced below 10 lakhs. Already the most affordable cars in the segment was also from Tata Motors, stable Tiggo at 12.49 lakhs. Other EVs currently available in the market from other manufacturers like Hyundai and Kia are about 20 lakhs. Bookings for the vehicle will commence from October 10. Currently, Tata Motors PV market share stands at 17%, while Maruti stands at 39%. We don't have formal coverage on Tata Motors. So we interacted with cement dealers. So a few updates from that. So interaction with the cement dealers suggests that the average cement price at all India level has increased by 2% month on month in September 2022. But given the weakness in July, August, average cement prices at all India level has declined by 3% QOQ in Q2 of FY23. Having said this, we expect demand to improve post Diwali and price hike has begun, and we would watch for continuation of it. In the past 1 month, many mid small cap cement stocks have seen run up in the stock prices, led by price hike and anticipation of consolidation. So we maintain neutral view on the sector and await better price point to buy Ultratech in the coming time. On lastly, on GCPL, so GCPL is targeting mid-teens growth in South Africa business through SKU rationalization, aggressive distribution expansion, and new product launches. On margins, inflation is a concern, hence expect margins to be under stress, and idea is to balance growth and margins both. So GCPL, we have positive on the stock, and it remains our top pick in the FMCG space. So that's it from my side.